या तो अभी अपने किसके अभी डायरेक्ट इस पे जाता है, ट्रेलर्स पे जाता है. तेरे को किसके एपी बारे डिल्लो में बात बाकी है, करना था एपी ना? डिल्लो का डॉक्यूमेंट्री बाकी है. हाँ हाँ वो बाद में लास्ट में हाँ, वो करता है ऐसे कैसे ये चलेगा? तो ये चले एक काम करता हूँ, मैं एपी डिल्लो के डॉक्यूमेंट्री के बारे हाँ में वही बात कर कर लेता ले हूँ. मैं। तुम लोगों को बाय द वे कुछ कॉन्टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री के बारे में, ये वो कुछ आइडिया नहीं. नथिंग, नहीं. इवन आई डिड नॉट हैव एनी क्लू. मैं इंस्टा पे बड़े प्रमोशनल मटेरियल्स देख रहा था कि ये उसका प्रीमियर हुआ था ना. तो उसमें बहुत लोग सलमान खान, रणवीर सिंह सब गए थे. जू पे ही हुआ था, अपने जू पीवीआर पे. हाँ, तो दैट बिकेम अ थिंग. एंड आफ्टर दैट आई जस्ट सॉ अ ट्रेलर अमेजोन पे. एंड इट वॉज नाइस कि वेस्टर्न डॉक्यूमेंट्रीज जो होता है ना कि वेरी हाई प्रोडक्शन वैल्यू, एंड इट इज़ अ शो सेट इन कैनेडा बिकॉज ऑफ द फैक्ट. ये ऑडियो कहाँ से आ रहा है? हाँ कुछ नहीं, हाँ हाँ, it is a show set in Canada because AP Dhillon is from Canada. मतलब he used to live here. He हर पंजाबी गुजराती की तरह चला गया. मैं और यार ऐसी चीजें नहीं बोलते ना. कैंसिल हो जाएगा. विग्गू को सबसे ज्यादा टेंशन है. नहीं ये डाल. मेरे को टेंशन है क्योंकि मैं खुद निकल रहा हूँ. अच्छा हाँ राइट. गुज्जू बॉय लंदन जा रहा है. रुक जाना यार भाई, एडमिशन तो होने दे. हाँ ठीक है, बट नॉट ट्राइंग टू स्टीरियोटाइप इट, बट विगू भाई अलग ट्रेन में चला गया. हाँ सॉरी. तो वेरी वेस्टर्न शो एंड एक्चुअली it's a very good show, very on point. You get to know AP Dhillon as a person से ज़्यादा his journey is interesting. It's interesting and Yeah. it's a very aspirational show because a lot of people who immigrate to other countries, they end up doing local collar jobs, and उसमें से कोई एक Right. बंदा ये AP Dhillon बन जाता है. It is a very aspiration. It becomes something to look up to. मतलब एंड ऐसे शोज बहुत चलते हैं टू बी ऑनेस्ट. शोज Makes नहीं, sense. इन जनरल स्टोरी टेलिंग का एक बहुत अच्छा ट्रोप इज टू गिव पीपल होप, एंड दिस इज अ शो अबाउट Yeah. होप कि Yeah. anyone can be this person. And हाँ, दिस इज अ वेरी गुड. हाँ सही बात बोला मैंने. Bro, it's like कि दिस इज अ शो अबाउट होप. Radio. बहुत सही बात बोला मैंने. बड़ा नार्सिसिस्टिक टेक है मेरे. I would like to thank me for this. I was going to say कि I think that is just a more thing. Like, have you watched more artist documentaries? I have. मैं मैं डिफरेंट क्या कहते हैं स्पेस फील्ड्स में देखे. मैं क्रिकेट के बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज देखे हैं, फिल्म मेकर्स के बहुत देखे हैं. हाँ, म्यूजिशियंस में this would be my first. I'm not sure. I used to watch a lot of documentaries, but Yeah. So yeah, like as you mentioned, the motivating quality that those artist documentaries have, that is like a in general thing that I've noticed in a lot of documentaries. जैसे Shawn Mendes का documentary मैंने देखा था couple of years back, and even like yeah, he is an exceptional like story. He started from making YouTube covers and then blew up into the biggest pop star in the world. But it wasn't like how a lot of documentaries tend to being like struggling people and all that. वैसा कुछ था नहीं, but it still had that motivating thing, like as you said कि तुम देखो, so even you can be that. yeah. So that is something about documentaries in general. Now you might know better in other genres of it, but at least in the music scene, beautiful. Yeah, completely agree. Adding to that, मुझे ऐसा लगता है कि Yeah. one thing that supports these kind of documentaries is कि it provides an insight, कि it gives us access to their internal world जो अपने को पहले नहीं पता होता. AP Dhillon के डॉक्यूमेंट्री में भी द लास्ट क्रिकेट का, आई फॉलो क्रिकेट अ लॉट, तो उसके ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है, आई हैव फॉलोड क्रिकेट फॉर ईयर्स नाउ, मतलब ओवर अ डेकेड. बट द टेस्ट करके एक शो आया था, उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रेसिंग रूम में अंदर क्या हो रहा है, वी गॉट टू नो कि लोग क्या बोल रहे हैं, झगड़े क्या हो रहे हैं, एंड एवरीथिंग वेरी अनफिल्टर्ड. सो Yeah. फॉर मी इट वॉज अ गेम चेंजर कमिंग टू
दिस डॉक्यूमेंट्री आई फील, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है दोनों से कि आई पर्सनली फेल्ट कि इट डिड नॉट हैव टू मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स और ऑब्स्टिकल्स कि एक बंदे का जर्नी अच्छा जर्नी है, मेहनत किया है, पहुंच गया है, बीच में दिस शो ट्राई टू, मतलब वो थोड़ा थोड़ा मिर्च मसाला तो नहीं बोलूँगा, बट छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट की तरह यूज़ किया है rather than having a proper conflict. Having said that, it's a non-fiction show, it's a documentary. हाँ, तुम्हारा क्या थॉट है कि what should take precedence, कि it being a very non-fiction nature या giving it a narrative? अपने ने भी डॉक्यूमेंट्री अपने कॉलेज में अपने को बनाना था. आई वॉज राइटिंग मतलब माइंड, सो मुझे याद है कि लिखूँ क्या, एडिट पे पता चलेगा क्या लिखना है. तो what's your approach as well as what's the right ethical way of going forward with it? Amir, do you want to go first? नहीं तू बता. So, see, if you like mention ethically, I don't know if there is a proper way to document things, because documentary, it's like there are two factors into it: what actually happened and what the director wants to show. So that way, I don't know like ethically how do you answer that question, but if you speak in context of the question, like the context that you have mentioned, like AP Dhillon documentary. Or just musical documentaries in general. Now, coming from a perspective of someone who is not entirely a filmmaker, like you guys do films in and out. I am more working in the music side of the business. So, even like keeping aside the part of like writing films and shit, like you know, when you mention artists, AP Dhillon Lele. So when me as a artist who's trying to break out, I have meetings and conferences, all these industry like people who are trying to like you know get themselves out there as brand managers, artist managers. So they take making documentaries as one of the storytelling tools rather than a luxury you have. It's like Ed Sheeran ने भी documentary बनाई थी which was released after his album to tell the story of how the album was made. It was an addition to the album rather than rather than it adds like you to know the brand. Exactly, it adds to the brand. And like even how do I put it, it's like in the modern day, in the more TikTok era, this has taken up a rise. For example, like how Charlie Puth started taking the phone and be like, what if this sounds like this? So 5 years ago that was done entirely through a documentary. We never got to know the behinds of scene of making a music part of music, making an album. It was only through a documentary that people used to do. Now it has taken a different step, like you know, with the TikTok culture and stuff. So I don't know how that will change going forward. But from that standpoint, I would suggest, like not suggest, but I would say it's like you know, just capturing the moment is the way to go, because you never know what you're trying to say. Because even in that moment, the person who's trying to make the music, he doesn't know what is going to come. You who's trying to capture the documentary, you don't know what is going to come. So it's like it's just things happening. And yeah. I totally agree कि it adds to the brand, etc. etc. Exactly. And although यहाँ पे एक I have an example, Gran Turismo देखी मैंने. हाँ, Gran Turismo is meant to be a real story. Okay, Right. It's about a guy, उसका journey है. The film is almost it documents everything जो उसकी life में हुआ है. It does, but what the मैं Wikipedia page पे scroll कर रहा था. There is a huge criticism. I'll spoil the film for you guys थोड़ा, कि there is an accident in the film, कि he is on the rise, जो character he's on the rise, racing करना चालू किया है, and Germany में he goes through an accident, his car turns over and side में जो spectators होते हैं ना, it goes through the barbed wires and the wall and spectator एक मर जाता है. रियल में हुआ है, हाँ रियल में हुआ है. एंड दिस गाय वॉन्ट्स टू क्विट रेसिंग, कि ही थिंक्स कि ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. बट डेविड हार्बर का कैरेक्टर टेल्स हिम, तो डेविड हार्बर वेंट थ्रू समथिंग वेरी सिमिलर व्हेन ही वाज यंग. एवरीथिंग इज़ अ ट्रू स्टोरी एंड इट प्लेज लाइक अ ट्रू स्टोरी. वो उसको बोलता है कि डोंट 99% ऑफ द पीपल विल क्विट, ओनली 1% वोंट. एंड तुझे वो 1% पे आना है या 99%, it gives him motivation to go for. This is a story. Now actual thing what happened was sorry
कमिंग बैक टू उसके बाद ही गोज ऑन टू विन लेमांस करके सबसे बड़ा इवेंट होता है, तूने फोर्ड वर्सेस फरारी में भी देखा फोर्ड होगा. वर्सेस हाँ, फरारी ही गोज ऑन टू मतलब सिक्योर द थर्ड प्लेस उसमें. दैट्स द स्टोरी, दैट्स द पिनिकल इवेंट. यहाँ पे रियल लाइफ में क्या हुआ है, वो लेमांस जीता है, उसके 2-3 साल बाद ही एक्सीडेंट हुआ. एंड मूवी में इट सर्व्ड एज अ कैरेक्टर ग्रोथ वाला मोमेंट, so that he Yeah, could win the thing. So right. अभी now how much you can change and alter to the real thing that happened. क्योंकि स्टोरी, क्योंकि इसमें आई अग्री कि इसमें अगर ये नहीं होता तो कुछ स्टोरी था भी नहीं. ग्रैंड टूरिज्मो में कैरेक्टर आर्क नहीं था, कुछ था ही नहीं. जीत आ रहा है, जीत रहा है, कुछ है ही नहीं. एंड दिस सर्व्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट नैरेटिव थ्रेड विच आई कंप्लीटली बॉट personally. Then मैंने विकीपीडिया पे देखा, there is a huge section of people criticizing the film about this incident, and that directly translates to my point यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज पे, कि कितना मतलब एपी डिल्लो के डॉक्यूमेंट्री में, not just his documentary but there are a lot of documentaries that just document stuff. उसमें how much do you want to alter without being unethical. जो इसमें देखा जाए, it is advertising itself as a true story, Gran Turismo, but it has altered a huge thing. Okay, now there is a huge backlash. The same thing, what if it's applied to documentary. You know, I think it depends on like to kya, like what narrative or why you are doing it. It's like for documentaries, I would, at least on a personal level, I would prefer them to be pure Unaltered. and authentic. Yeah, but at the same time, if it's like a film which is based on true events, Yeah. then just for the sake of narrative, as long as the movie is enjoyable, I don't think that will be an issue, because the people who are genuinely interested, like you, they'll go back and see ki what actually happened, right? Because based on a true story is still based on a true story. It's not Yeah. the exact replication of a true story. I agree. There is a difference. एपी डिल्लो Yeah. के डॉक्यूमेंटरी में स्टार्टिंग में there is a header. It is a non-fiction thing. It Yeah. is not scripted, which is Yeah. it serves the purpose. There is also a documentary Exactly. called Welcome to Wrexham. Ryan Reynolds है उसमें, मतलब उसका नहीं है, तो he bought a football team, प्रीमियर लीग का उसने टीम बाय किया, which was nothing, मतलब जीरो पे. हाँ, and they won their first championship. It is the journey of him buying the team till them qualifying. So it is Interesting. It is also very unaltered. Sports documentaries are meant to be unaltered, थोड़ा. But Usually, if you take the same thing, Oppenheimer mein, now I have got this information through YouTube video and stuff, so I wouldn't take this for 100%. Take it with a grain of salt. But jitna I remember from the information I got, you remember the apple that he poisoned? वो In the वो उसका बेटा या पोता is not suing them, but he's he मतलब he's part of the, मतलब वो मना कर रहा है कि ये मत दिखाओ. Yeah. So more than just that, firstly, the type of poison that we used, वो उसके label लिखा हुआ था, I forgot the name of it. Potassium something. हाँ, मेरे को याद नहीं है, but we don't know what it was. Even his book doesn't mention what it was. And secondly, after doing that, he doesn't save it from the person. Firstly, his teacher was going to eat it. The teacher finds out that it has been spiked. Then he calls him to the authorities, and then his parents are called, and his father gives the school a lot of money just to keep him there, which is completely taken out of the movie because they wanted to show him struggling. But in reality, Oppenheimer does come from a family of money. He was not a poor child. He's come from a family of money. Sorry. So that is something that was, I noticed ki thoda sa in the main movie, Nolan has toned it down to show what his struggle was. नोलन ने उसका नोलन का टेक है मूवी का टेक. इवन इफ यू रिमेंबर दिस सीन वेयर फ्लोरेंस प्यू का कैरेक्टर कमिट सुसाइड, Yeah. देयर इज अ शॉट ऑफ समवन होल्डिंग हर नेक, या उसका ब्लैक ग्लव्स में ये जस्ट अ स्लाइट एक सिर्फ हाथ दिख रहा है. हाँ, पूरे, एंड इट्स वेरी हार्ड टू नोटिस. सो इट्स बेसिकली नोलन कीपिंग इट एम्बिगुअस कि उसने सुसाइड किया था, कोई कम्युनिस्ट के अगेंस्ट जो होगा उसने उसको मारा था, सो दैट ओपनहाइमर इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड.
And also the main part, like bro, वो गीता का quote that they used in a very wrong context. It was supposed to be Yes. an interview, man. I wanted to see that interview. But Like, it happened way after, no? I know it happened way after, but like, I wanted to see him say it for the first time in an interview rather than having sex. But it's a more क्या कहते So, हैं नहीं it's a more impactful way of saying the same. not really, not really. I will no, not buying it, although dude. although Not although impactful. the film क्या कहते हैं एक्चुअल में वो इट वाज अ मतलब इंसेप्शन ऑफ दैट आइडिया बट द एक्चुअल डायलॉग कम्स व्हेन द एटॉमिक बॉम्ब गोज ऑफ द एक्चुअल डायलॉग कम्स देन कि आई हैव बिकम डेथ Didn't एंड get you. वो दो I बार didn't get यूज you. हुआ है वो डायलॉग कि आई हैव बिकम हाँ. डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स वो दो बार आता है एक फ्लोरेंस प्यू के साथ और भगवत गीता हाँ हाँ Like firstly, like in actuality, he doesn't even know this quote until the whole thing has happened. Like the only reason he starts reading the Bhagavad Gita is because he feels guilty and he wanted to make sense of his own actions. does he So yeah, बिकॉज in नहीं act मूवी में एटलीस्ट मूवी में movie नहीं. नहीं मूवी में In क्योंकि in बताया गया कि ही यूज टू लर्न लैंग्वेजेस अ लॉट संस्कृत he was used रियली to. So that was there. But him using the quote and him specifically referring to Bhagavad Gita, one of the main reasons, again, as I mentioned, all the information that I've gotten from the internet, I don't know how much of it is real. इंटरनेट इज नॉट मतलब ट्रस्टफुल प्लेस मतलब इतना ट्रस्ट Why तो बोल रहा हूँ? So take it with a grain of salt. It can be true, it can be colored. सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो Take it with a grain of salt. Yeah. But more of him reading it was just to make sense of his own actions, which is where अभी मैंने इतनी गीता पढ़ी नहीं है, but that quote is something that stuck by him so that he could make he was ठीक है, let's not get into the Gita, but it made him help him make sense of it. Secondly, do you know we got to see that scene unaltered because मेरे दोस्त बाद में जो देखने गए from We- second day onwards. वी डिड नहीं हमने ऑल्टर्ड वर्जन Yeah. देखा है अनऑल्टर्ड वर्जन रेडिट पे देख हाँ My friends describe it very differently and I'm like, नहीं, नहीं। really? हमने ऑल्टर्ड वर्जन देखा है उसमें एक्चुअल में सेक्सी नहीं हमने देखा है एक्चुअल में इंडिया में उधर लंबा सेक्सीन है उधर बट One of my friends went to see it. They're like, they actually put something on the screen. हाँ तो And तो फ्लोरेंस प्यू इज सिटिंग ऑन द चेयर ये वो सब शी इज कवर्ड अपने ने जो देखा एंड वेरी गुड वीएफएक्स मतलब ऑन पॉइंट मेरे को तो अपने को देखते हुए नहीं पता चला बट एक्चुअल में शी वाजंट I did not go for the second watch इसलिए मेरे को पता नहीं कि what is exactly happening, but 3 people told me 3 different versions of it and I'm like, really? मैं 2 बार देखी तो मतलब मैं तो दोनों बार सेम ही वर्जन देखा इंडिया में कट ही रिलीज नहीं हुआ है। जो तू अनऑल्टर्ड बोल रहा है ना वो इंडिया में नहीं रिलीज हुआ। मैं तो ओपन आइमर का प्रॉपर रिसर्च करता था रेडिट पे तो वहाँ पे सेंसरशिप का है एंड ऑल्सो इट्स ऑन विकीपीडिया पे प्रॉपर है कि शायद अबू धाबी वो सब में रिलीज भी नहीं हुआ यूएई वो साइड जापान में बैंड है ब्रो. कहीं तो बैंड है आई फॉरगॉट जापान. Anyways, coming back to the authenticity and ethical nature. आमिर तेरे क्या Yeah. thoughts? ये वही कि देख नैरेटिव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर तू डॉक्यूमेंट्रीज भी देखेगा तो व्हेन दे आर डॉक्यूमेंटेड वेरी वेल बट उसमें अगर तेरा नैरेटिव उतना नहीं है अच्छा तो यू आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड इन द स्टोरी दैट्स द रीजन दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू चूज अ गुड टॉपिक और चूज अ गुड मतलब चूज अ गुड topic to make a documentary on, right? But अगर तेरा documentary, but there are some documentaries जो बहुत which don't have a lot in the narrative, but because they are on a specific character or a specific person, you want to know his journey. Like Spielberg का documentary था. Spielberg के documentary में there is not many ups and downs in his story, but still we want to know कि what went through his mind while making those films. तो वो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. बट अगेन जो हाँ वो फिल्म्स वाली बात तो आई अग्री विद बोथ ऑफ यू कि फिल्म्स में इफ इट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी देन द फिल्म मेकर्स हैव सम लिबर्टी टू टेक देयर ओन डिसीजंस बट डॉक्यूमेंट्रीज में यार वही है कि जो ऑथेंटिसिटी और जो वो मजा है वो फिर चला जाएगा इफ यू नो वी ऑल्टर I agree with you about and the making हाँ about the making part of it जो तूने पूछा कि what technique should be used it depends on the maker actually and it depends on the topic
अगर तेरे Yeah. पास पूरा स्टोरी है पहले से, हम्म then you can actually write it in a way कि yeah you can write it in a way, I agree. but there are times when you have to get all the content and then write on the editing. मोस्टली Yeah. यही होता है हाँ Like if you're documenting something that is itself forming and itself Yeah. shaping, तो फिर you don't even know कि like कैसा हो रहा है. If you're taking like a history piece and then making a documentary out of it, then it becomes a different story where you have space to like fiction it out. Social network ले ले. हम्म Right. Yeah. वो like the best scene of the film never happened in real life, dude. which scene लैपटॉप लेके फेंकता है like lawyer up because I'm not coming for you, I'm coming for everything. और It वो never happened in real life. मार्क जकरबर्ग ने मूवी देखने के बाद बोला था the only thing they got right were my clothes. Yeah. Like, he was like none of मतलब पूरा मूवी अलग ही जोन में चल रहा है. But still one of the best films. as Amir also said the same thing, Vigu also said the same thing कि जो unaltered मतलब it adds to the brand of जो topic पे मतलब Yeah. okay Honestly, sometimes you know these movies become more enjoyable than the actual stories itself, and which is where like true filmmaking comes into it. Because I wouldn't sit and listen to Mark Zuckerberg's story, but I'd watch The Social Network again. true Exactly. I agree. So yeah, exactly. Great. AP Dhillon documentary, good documentary. Lot did not have a lot of conflicts, but very good production quality and good show. Good show. Watch it. And If you want to watch more music documentaries, I'll send बोलो. you a couple. मेरे को Sure. अभी नहीं आ रहा दिमाग में, but I'll send you a couple. I want to. Like from the old days. मेरे को The Last Dance देखना है बहुत टाइम से. It's the biggest or the best documentary ever. Michael Jordan. किसका? Michael Jordan and NBA. हाँ तो